एवरीवन, दिस इज़ फरहत एहसान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा लुक जो मैंने क्रिएट किया है दुर्गा पूजा के लिए। फेस्टिव सीजन है, सो आई एम लविंग दिस लुक, वेरी ट्रेडिशनल इंडियन ग्लैम लुक। सो आई एम जस्ट लविंग दिस लुक। काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपको जानना है कि मैंने इस लुक को किस तरह से अचीव किया है तो मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहें। एंड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, या फिर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट मेरी वीडियोज़ हमेशा आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। साथ ही मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैंने स्किन केयर ऑलरेडी कर ली है एंड आपको भी मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी स्किन एंड फेस हाइड्रेटेड रहे। सो नाउ आई एम टेकिंग प्राइमर दैट जो मुझे स्वेटिंग होती है वो ना हो एंड मेरी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो आई एम टेकिंग दिस हिलारी रोडा का HD प्राइमर। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग होती है। एंड देन ऑल ओवर द फेस मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड माय शेड इज़ 128 वार्म न्यूड। तो इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट लगा लेने वाली हूँ। डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी। तो आपको टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है, ड्रैग नहीं करना है बिल्कुल। सो नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी का कंसीलर। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने जैकलिन हील ऑल इन वन पैलेट लिया है, मिक्स करके। जब भी आप अपनी आईब्रोज फिल इन करें तो स्टार्टिंग से मत फिल इन कीजिएगा, अपने यहाँ पे से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके ब्रश में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा मेस लगेगा। सो या आप यहाँ से स्टार्ट करना। मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से अपने आईब्रोज को फिलिंग किया है। नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप। सो नाउ आई मेकअप के लिए मैंने सिवाना कलर्स का आई पैलेट लिया है। पिगमेंटेशन आप देख लो काफ़ी अच्छी है। ये ब्राउन शेड पिक किया है सो दैट थोड़ा ऑरेंजिश रस्टी ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड हो जाए। तो हमें इसे आउटर वी पे पहले डिपॉजिट करना है, देन
ब्लेंड। नेक्स्ट हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये आपस में मर्ज हो जाए एंड हार्श ना